Law is a constantly evolving aspect of democracy. The hierarchies that exist in our society transmit itself to the legal system. People who are subjected to violence, marginalization, oppression, how do they use the law? What is the kind of access to law that they seek? Marg was an institution that was built on those understandings. Requirement of an organization like Marg would always be there. The intensive work that Marg has done is unparalleled. All the grandeur of the law, that I started experiencing in being associated with Marg. Marg was the first place that allowed me to explore my sense of justice. Late 80s, I would say, it was a very interesting phase for the country. We were just entering, I think, into the new age of infrastructure development. They started building dams. What happens, suppose for creating a dam or for creating a project, you acquire land. Submergent area बोलते हैं उसको, उनको वहाँ से लोगों को हटना पड़ेगा. Their social rehabilitation, cultural rehabilitation would be an issue. The people who are affected have to be rehabilitated. One of the key areas of work was working with people who are displaced by development projects. Dr. Vasudha Dhagamwar went first to the Narmada Valley. So Vasudha was a socio-legal researcher. Vasudha proposed work on displacement. Myself, Vasudha, and one more, Usha Vaidyanathan. We collected information from more than 18 villages in Madhya Pradesh. The whole thing was to get to know a problem that had not surfaced very much in our minds. What's happening here? What is going? How many people are being affected? What is the government promising them? What does the law say? So we decided to go into that field of telling the people what their rights were. We did a very good booklet on Land Acquisition Act. People are routinely coming to buy that booklet. Lawyers are buying it in Delhi because they found the act too difficult to understand. It really became a landmark publication in those times. उसी दौरान एक famous एक मथुरा rape case हुआ था. Mathura was the name of a girl. She was gang raped in a police station. Supreme Court gave a very objectionable judgment in that. उसकी बात कैसे मान सकते हैं, you know. That is when Dr. Upendra Bakshi, Vasudha, they wrote a letter to the Supreme Court saying, please revisit your decision. She and Professor Upendra Bakshi and Latika Sarkar shaped the whole thinking around rape law. And that is what changed the rape law in this country. That was around the same time that she set up Marg. It was called the Multiple Action Research Group. So it was always joined to this idea that research must lead to action. We had our first office in Chaput-Chand. I found the environment very fascinating. It was a space for young people to come together, dream together. Intellectually, it was always a spark. Slowly, many more people joined. We started working on women and children also. And that's where Hamare Kaanoon came in. Hamare Kaanoon is the law simplified for the commoners, common issues, the family law, marriage, divorce, like that. We really worked on the design. It should be readable, it should be understandable. Hamare Kaanoon has played a very, very important role in looking at legal reform. शुरू में जब मैं मीटिंग में जाने लगी थी तो इतना नहीं हमारी समझ में आता था संविधान के बारे में, जैसे हम स्कूल के टाइम में पढ़ते तो थे, लेकिन जब हमने अब दोबारा उठाई ये किताब संविधान क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, तो धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगी कि हमारे क्या अधिकार हैं. सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो अनुसूचित जाति संबंध रखते उनके लिए, बीपीएल कार्ड परिवारों के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसके ऊपर इसमें जानकारी दी गई है. ठीक है, इसको आपने यहाँ पर आकर एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है. पहले तो जानकारी सिर्फ कुछ हद तक थी, लेकिन अब हमारी जानकारी का दायरा बढ़ने लग रहा है और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अन्याय सहना और कुछ न कहना. Bol Basanto was like a soap opera. They were audio films simplifying laws for rural and illiterate women.
Basanto was this woman who would go and give information to women about their legal rights. तलाशी तो सिर्फ महिला पुलिस ले सकती है, आपकी नाक के नीचे गैर कानूनी काम। The idea was to make it light and enjoyable. कानून होते हैं समाज के नियम, और जितने भी नियम होते हैं ना, उनके अलग-अलग नाम रख देते हैं। Old Basanto, of course, became a runaway success. It was so popular and so lokpriya on the local channel and used in these small localities. मतलब इस फिल्म के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि जो कानून है वो सबको समान रूप से न्याय दिलवाता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो गरीब है। कि हमने बोल बसंतो फिल्म देखी और कानून किताब पढ़ी, उसमें है कि जो पहले 18 वर्ष से कम उम्र में नाबालग में शादी किया जाता था, अब है कि उस पर कानूनी अपराध है। समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में मुझे नहीं पता था। ये मार्ग संस्था के द्वारा ही हमें पता चला है। Marg was working largely on issues of legal awareness and had some of the best publications. We updated many of the Hamare Kanun, and some new aspects of law which were not in the earlier publications were brought in. The domestic violence law had been enacted in 2005. So we brought out a handbook. It gave you the latest judgments, it simplified the law, it told you how to access this law. I think one of my fondest memories of Marg is the young people I worked with. I appointed Noor Alam, he had applied. उन दिनों में जब मैंने मार्ग ज्वाइन किया था, हम लोग लीगल अवेयरनेस और लीगल रिसर्च करते थे, और प्राइमरीली लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप्स काफ़ी ऑर्गेनाइज करते थे, लीगल लिटरेसी मटेरियल बनाया करते थे, और जो बाद में भी बनता रहा। मार्ग का वो पोर्टिव कंटिन्यू रहा, ऑल्दो जब सावदा घेवड़ा का काम चल रहा था। एक स्लम रिसेटलमेंट कॉलोनी है दिल्ली में, सावदा घेवड़ा स्लम रिसेटलमेंट कॉलोनी। उन दिनों आप देखते हैं कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, तो गवर्नमेंट दिल्ली के कई लोगों को उठा के रिलोकेट किया। जब हम यहाँ आए तो हमारे प्लॉट इधर उधर कटे हुए थे, किसी को पता नहीं था कि हमारा प्लॉट कहाँ पर है, किस जगह पर है। सबसे पहले हम लोग कॉलोनी में आए तो यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या थी। पानी वहाँ बहुत खा रहा था ज़मीन का, और इतने पैसे नहीं है कि वो बोरवेल करा के पानी निकलवा ले, तो टैंकर से पानी आएगा वहाँ पे। हमारे वर्कशॉप्स के दौरान अचानक से लोग उठ के भागना शुरू हो जाते थे। महिलाओं का कहना होता था, भैया पानी नहीं होगा घर में ना, तो बड़े झगड़े होते हैं। पानी की समस्या के लिए हमने RTI डाली थी। मार्ग ने हमारे साथ काफी समय तक इसके लिए लगातार प्रयास किया। हमने ये करा कि वो RTI जो है कम्युनिटी के महिलाओं के माध्यम से लगवाए। तो आज वहाँ किसी महिला से बात करें, वहाँ पे वो कहती है, भैया हमने RTI लगाया है, वो अपने ऑनरशिप लेती है। पता चला कि यहाँ पे मीटिंग लेते हैं मार्ग वाले, तो हमें उसके साथ हम जुड़े उनके साथ। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे यहाँ पानी आएगा, तो हमने ITI लगाई। उन्होंने हमें समझाया था मार्ग वालों ने कि ऐसे ऐसे करना है। And that was the fantastic moment I wanted to share. I was very happy to hear when Noor became the executive director, because I think that speaks volumes about Marg. ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। मनोज कुमार पहले कम्युनिकेशन असिस्टेंट हुआ करते थे, फिर वो कैसे ग्रो करते हैं, फिर एक इंस्टीट्यूशन का आज एडमिन ऑफिसर हैं। कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो मार्ग में इंटर्नशिप करके जॉब पे आए। मेरा जुड़ाव 2005 में हुआ, जब मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट था। उस समय स्ट्रेंथन एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया एक जुडिशियल रिफॉर्म का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें मार्ग के साथ हम भी काम कर रहे थे। साथ ही साथ जेल रिफॉर्म के कई सारे कार्य हमने दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किए। I did internship with Marg in the month of January 2012. I really enjoyed the vision and work of Marg. As a result, I joined the organization. दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के सबसे पहले दिल्ली के पैरा लीगल वॉलंटियर बैच के रूप में शुरुआत हुई थी हमारी, और हमें वहाँ जो CD के माध्यम से जो मार्ग का प्रशिक्षण का मॉड्यूल है उसे जान के पढ़ के समुदाय में आज भी मैं उस प्रशिक्षण के तहत जो चीज़ें हमें और जो जानकारियाँ हमें मिली कानूनी जागरूकता के संबंध में, हम सतत कार्य कर रहे हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं सना का देना चाहूँगा। सना herself started as an intern here. Recently, I've joined Marg as executive director. Way back in 2004, I was very young, just out of college. I came here to volunteer, but then stayed for almost 3-4 years. Even at that time, it was a lively place, full of young people, lot of interns here. Initial work जो मैंने किया, that was mostly on labor laws and women's rights. I was working in jails in MP. Lot of juveniles were there in the jails at that time.
We would list them down. We would ask how many juveniles are there, how many murder cases are there, how many of you have lawyers, do you know that you can get a lawyer for free from the state. The entire procedure for the trial would change because of the identification of their age and doing the proper calculation. The parents were so grateful. सिर्फ एक एप्लीकेशन की वजह से वो बच गया. If they would have remained in that prison, it would have been different journey, different life for them. Law as a tool cannot be a privilege for few people in the society. It should be a public resource, accessible and available to everyone. आम धारणा होती है कि कानून मतलब कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस. Even as lawyer, I'll be reluctant to go to a police station because of the hostile atmosphere normally one finds. हमारे देश में कम से कम 10 से 12 हज़ार लॉज हैं और हर इंसान को वो समझना है. We are trained to be good lawyers, we are trained to be good doctors, engineers, but we are not trained to be good citizens. Marg is taking the law to the citizens of the country. And once they know the law, they can go and get a remedy from the law. Going forward, we plan, so Marg has to develop the change makers. Marg has to create a cadre of community justice workers, revamping our capacity building modules and making it more engaging, experiential, immersive. That is the idea going forward. It's a 24/7 responsibility. If we really believe that as humans we have dignity and it needs to be secured, we have to continue. It is difficult, it is full of challenges, but we have to keep on going.